my name is Deekshita and welcome to my channel. I am from Uttarakhand, and if you're seeing this face for the very first time, then please subscribe to my channel. Click on that red button down below and make sure that you subscribe. So today I'm back with a very different kind of a video. I've not done anything like this on my channel so far, and there is this one particular video that's going viral on YouTube right now, and it's like testing out fashion hacks, makeup hacks, or lifestyle hacks in general. And most of these hacks are from a particular channel called 5 Minutes Craft. It's a DIY channel which gives you various kind of hacks, DIYs for anything and everything, and you can follow that page if you want. I saw a lot of videos, then I checked out some videos on the channel too, and I was intrigued to see कि क्या ये hacks सच में work करते हैं या नहीं, because they looked pretty promising. So I decided to try them out for myself and see कि how good are they. And obviously you'll find it useful too, क्योंकि I'll give you my genuine review on whether you should try them out for yourself or not. So if you like this video, then give it a big thumbs up. Do not forget to subscribe to my channel, share my channel with all your friends, and if you want me to do videos like these more, then tell me in the comment section आपकी ओर से कोई वीडियो recommendation है, कोई वीडियो request है, तो वो भी मुझे बताइए, and I'll try to make that video for you. And yeah, now without wasting more of your time, let's just get started. Now the first hack is pretty common और ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. Here she's taken a shirt and a bangle. उन्होंने इस बैंगल को शर्ट के फ्रंट पोर्शन से इंसर्ट किया है, and then she took both the ends and tied it at the back. So I'm taking this white shirt क्योंकि ये काफ़ी oversized है, and this cuff. These are definitely not going to get tied at the back क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं. And I don't know what kind of a shirt she took जो कि पीछे तक चले गए, because this is, as you can see, quite big and oversized. But worry not, हम इसको या तो आप यहाँ पे दोनों ends पे ऐसे tuck in कर लीजिए, and you can put on a safety pin or something to secure it. And I think you can wear a tube top inside it, and this will look pretty cute. I think this is a very different take on a shirt. और अगर आप अपनी shirt किसी बोरिंग से शर्ट हो कुछ थोड़ा डिफरेंट बनाना चाहते हैं, then you can definitely try this hack. I'll recommend you to do this because ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा है. Now for the second hack, we'll make a shrug out of a scarf. यहाँ पे इन्होंने एक स्कार्फ लिया है और अपने सर पे उसको रखा है एज अ घूंघट. उन्होंने फिर फ्रंट के दो एंड्स लिए हैं, उसको टाई किया है, flipped it back, and voila, है a shrug ready. I'm taking this scarf for this, and I think ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है. So here you have your shrug ready, and this is what it looks like. I think it looks pretty decent from the front. काफ़ी अच्छा लग रहा है. Since ये थोड़ा सा बड़ा स्कार्फ था तो ये ज़्यादा ड्रेप हुआ है, ज़्यादा लंबा है. अगर थोड़ा छोटा स्कार्फ लेंगे तो ये इतना ज़्यादा लंबा नहीं आएगा. So you can choose accordingly. But the problem is the back. ये बहुत weird सी situation है from the back. Maybe you can take this end and इसको ऐसे लेके यहाँ पे tie कर लीजिए किसी तरह. Still looks a little decent, although I don't think I'll give this a try. So if you try it, maybe try it this way. इसको ऊपर लगाइए and then put a belt over it ताकि थोड़ा सा shape मिले या आपकी body में flattering तो लगे. Now on to the third hack. Here this girl turns this midi skirt into a tube dress, and this looks like one of the best hacks. तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है. So I'll quickly get out of my t-shirt and show you how this looks. So this is how this looks. I think this hack is amazing. It's awesome. You should definitely try it out. So you can wear this with a denim jacket, a leather jacket, a bomber like this one. This gets a 10 on 10 from my side. Now I really want to see how this next hack works out, क्योंकि इस टाइप की shirts अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है. If you see a lot of sites, Lulu and Sky, Shein, आपको हर जगह इस टाइप की shirts या tops मिलेंगे जिसमें एक side is of a different pattern and the other side is of a different pattern. So here this girl takes two different shirts,
वो उनको साथ में बटन करती है एंड देन शी मेक्स देम एज वन. सो लेट्स ट्राई. I'll be taking a plaid shirt and a white shirt for this because I think this contrast looks very good. So this is what it looks like. मुझे ये वाइट और प्लेड का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड दिस लुक्स क्यूट बट आई डोंट थिंक कि ये बिल्कुल भी प्रैक्टिकल है, आप इसको पहन पाओगे बिकॉज ऑल्दो ये दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा है बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिस वन इज़ मोर ओवर साइज देन दिस वन. तो अगर आप कभी ट्राई करोगे तो दोनों सेम साइज़ की होनी चाहिए, सेम फिट की होनी चाहिए. सेकेंडली इसका जो बैक सिचुएशन है ये बहुत ज़्यादा वियर्ड है. So how are you going to carry this out? If you want to experiment, आप बहुत ज़्यादा फैशन में एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हो, then you can try this for yourself. थोड़ा सा शर्ट सेम फिट का लेना and I think this looks very cute. मुझे ये दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, स्पेशली दिस कॉम्बिनेशन. एवरीडे लाइफ के लिए ये बिल्कुल मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल नहीं है बट इफ़ ऑन अ फोटोशूट या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हो, आप किसी से इवेंट में जा रहे हो वेयर यू नीड टू एक्सपेरिमेंट अ लिटिल, यू कैन ट्राई दिस फॉर योरसेल्फ. आई थिंक दिस लुक्स क्यूट बट इट्स नॉट प्रैक्टिकल. नाउ we've come to the last hack and here this girl makes a top from a pair of leggings. This looks very easy. You just have to take a legging, a pair of scissors and cut through the crotch area and you'll be ready with your t-shirt. Here I've taken this pair of black leggings and I'll cut a semicircular cutout from the crotch area and I'll put it on and show you how this looks. So I've cut it to the crotch area. Now we'll use these as our sleeves और ये हमारी waist पे आएगा. So let me just put it on. Now let me get out of my t-shirt and show you how this looks. This is how this looks. ये एक full sleeved crop top बन गया है और ये neck में I did a very bad job cutting it. मैंने बहुत zigzag से काट दिया तो ये अच्छे से नहीं आ रहा है बट when you cut it make sure कि आप थोड़ा अच्छे से काटेंगे और ये बहुत अच्छा लुक देगा. आप इसको ऐसे ऑफ शोल्डर भी बना सकते हैं if you want like this और आपके पास एक ऑफ शोल्डर टी क्रॉप टॉप तैयार हो जाएगा. So you can try this hack out. Although मेक श्योर कि जो लेगिंग्स है वो थोड़े फिटेड हो. मेरी ये बहुत स्ट्रेच्ड आउट हो गई हैं तो ये यहाँ से थोड़ा सा लूज है. सो यार दिस इज अगेन अ वेरी गुड हैक, यू कैन ट्राई इट. लेकिन आपको जो लेगिंग्स होंगी वो डार्क कलर की लेनी पड़ेंगी बिकॉज ये जहाँ पे स्टिचिंग वगैरह होती है ये सारी साफ दिखेगी अगर ये कोई लाइट कलर होगा. एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप यू लाइक्ड इट. अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 भी करूँ तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. Please make sure that you subscribe to my channel and hit that like button, share my channel with all your friends and I'll see you next time. Until then, keep smiling. Bye.